हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुड़ किस तरीके से बनाया जाता है। वो गुड़ हमने हमारी फैक्ट्री पर अपने हाथों से बनाया है। मेरे पिताजी वो गुड़ बना रहे हैं, उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जानकारी के हेतु एक वीडियो है। गुड़ में दो प्रकार के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक केमिकल जहर है और दूसरा केमिकल है वो नेचुरल है। तो जो जहर वाला केमिकल है वो गुड़ का जो ब्राउन कलर नेचुरल कलर बनता है उसको सफ़ेद बनाने के लिए, वाइट करने के लिए वो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो नेचुरल जो केमिकल है वो भिंडी उसको कहा जाता है। तो भिंडी इसीलिए डालते हैं कि गन्ने में जो अशुद्धियाँ रहती है वो निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़े जी, हमने जो घर पे गुड़ बनाया है तो उसमें हमने कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है, नेचुरल भी नहीं किया है और जहर वाला भी नहीं किया है। तो दोस्तों, आइए आपको मैं बताता हूँ किस तरह से हमने गुड़ बनाया है। Great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. You need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me
sit on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors. दोस्तों अभी जो हमने गुड़ बनाया वो दिखाया आपको मैंने। तो दोस्तों वो गुड़ हम हमारे गांव में भी, हमारे खेतों में भी बनाते थे। मेरे पिताजी ने बनाया था। हमने लास्ट में 2007 में हमने गुड़ हमारे खेत में बनाया था, उसके बाद नहीं बनाया है। तो दोस्तों ये गुड़ घर पे बनाने के मज़ा के लिए मज़ा आना चाहिए, आनंद मिलता है कि भाई बाहर जो गुड़ बनता है और किस तरीके से बनता है मालूम नहीं होता, हम खुद बनाते हैं तो उसका एक मज़ा लेते हैं हम, इसलिए हमने बनाया है। तो दोस्तों गुड़ बनाना थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि जहाँ खेतों में गुड़ बनता है तो वहाँ गन्ने के छिलके उसके फायर में इस्तेमाल किए जाते हैं और हमारे यहाँ सेपरेट फायर लगाना पड़ता है, तो महंगा पड़ता है। आज भी गुड़ बिना जहर वाला बाज़ार में मिलता है, तो वही खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा बस एक जानकारी का है तो एक वीडियो था। आज के वीडियो में इतना ही, और एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।